Hello students, I Milan Bharar welcome you all to my YouTube channel. So today we are going to start our third session of quadratic equation, and today we are going to learn the first method of solving a quadratic equation. So let us revise the very first thing, that is the standard form of quadratic equation. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, while the condition is a not equal to 0 and a, b, c are real numbers. So let us start the solution of quadratic equation. So there are three methods for solving a quadratic equation. Very first one is factorization method, second one is completing the square method, and the third one is formula method. So today we are going to learn the factorization method. So solve the quadratic equation by the factorization method. So very first equation is 3x square plus 34x plus 11 equal to 0. So it is in a standard form. So now let us factorize this equation by splitting the middle term. Factorize by splitting the middle term. So now what is the first term here? First term is 3 and the last term is 11. So find the product of first term and last term. So first term and last term is 33. So factorize 33 in such a way that by addition, factorize 33 in such a way that by addition. Why by addition? Because last term is plus here. If last term is minus, then by subtraction we need the middle term. So here last term is plus, therefore by addition we need middle term. So factorize 33 in such a way that by addition we get the middle term. So the very simple factors are there, 1 multiplied by 33. So now if you add 1 and 33, then it is equal to 34. So the factors are 1 and 33. But here you can see that what are the signs of these two factors? Since the last sign is plus, the given middle sign to both the factors, give the middle term sign to both the factors. So here middle term sign is plus, therefore both the factors are plus. Here middle term sign is what? Plus, therefore both the factors are plus here. Okay, so here middle term sign is plus, therefore both the factors are plus. So plus 1 and plus 33, that becomes 34. So let us write here 34x as x plus 33x. 34x is splitting in x plus 33x. Now taking common from first two terms and taking common from last two terms. So here you observe that x is common from first two terms. So take x is common from first two terms. So if x is common, then in the first one it is 3x, because 1 power of x is common here, so we are left with 3x only. X total common, so we are left with only 1. Now here 11 is common because 11 3s are 33 and 11 is here also. Therefore 11 is common from these two terms. So plus 11 into bracket of 3x plus 1 equal to 0. Now taking 3x plus 1 common from both the terms, so it is 3x plus 1 and we are left with x plus 11, that is equal to 0. Now we know that if the product of two brackets is 0 when and only when either first bracket is 0 or second bracket is 0. So very first bracket is 3x plus 1 equal to 0 and the second bracket is x plus 1 equal to 0. Now making x as a subject. So if you make x as a subject, then it is 3x minus 1 and it is x equal to minus 11. So x equal to minus 1 by 3. This 3 goes to the denominator and it is equal to minus 11. So the factors are minus 1 by 3 and minus 11. Therefore the roots of the given quadratic equation are minus 11 and minus 1 by 3. That is the final answer. So here you need to remember one thing is that if the last term is plus, then by addition we need middle term. If the last term is minus, then by subtraction we need the middle term. So here let us take one more example. So here you easily observe that the equation is 2m square plus 19m plus 30 equal to 0, which is in a standard form of quadratic equation. So now next is we want to factorize, and by factorization we need the middle term. So what is the product of first and last term? 2 multiplied by 30. So 2 multiplied by 30 is 60. And here last term is plus. Last term is plus. Therefore we get middle term by addition. We want middle term by addition. So
Let us try to factorize 60 in such a way that by addition we get 19. So here find two factors of 60 in such a way that by addition we get the middle term. So here 1 multiplied by 60. So if you add these two numbers, then it is 61, which is not required here. Here we need required 90. Now if you try to divide by 2, because 60 is a even number that is divisible by 2. So 230, the sum is not equal to 19. Therefore this factor is also not possible. Now factorize like 3 into 20. The sum is 23, which is not equal to 19. Now it is also divisible by 4. So if you divide by 4, then 4 and 15. And if you add 4 and 15, then we get easily 19. So yes, this one is the correct factor. But here we have to observe the sign of the middle term. Here middle term is plus, therefore both the factors are plus. If the middle term is minus, then both the factors are minus. So here give the sign of last term is plus, give middle term sign to both factors. So here middle term is plus, therefore both the factors are plus. Okay, so now it is what? 2m square plus 4m plus 15. 2m square plus 4m plus 15m, because 19 is splitting in 4m plus 15m. So 4m plus 15m plus 30 equal to 0. Now we have to take common from first two terms and the last two terms. So from first two terms we have to take 2m as common. So if 2m is common, then into bracket of m plus 2, because 2 is common and 1 power of m is common, so we are left with m here, and here 2 2s are 4 and m common, so it is 2 only. Now plus 15 is common from last two terms, so here it is m plus 2, that is equal to 0. Now from these two terms m plus 2 is common, so it is 2m plus 15 equal to 0. Now we know that if the product of two numbers are 0, then one of them must be equal to 0. So either first term is 0 or second is 0. Either first bracket, that is m plus 2 equal to 0, or 2m plus 15 equal to 0. So m equal to minus 2 or 2m equal to minus 15. Now this 2 goes to the denominator, so it is minus 15 by 2. So m equal to minus 2 or m equal to minus 15 by 2. So these are the roots of the given quadratic equation. So it is a very simple method to solve by factorization method. Okay, let us take one more example of factorization method. So here it is in a standard form of quadratic equation. So factorize by splitting the middle term. Factorize by splitting the middle term. So here what is the first term and what is the third term? First term is 1, third term is 132. So 1 multiplied by 132, that is equal to 132. Now here last term is minus. So if last term is minus, then by subtraction, we need middle term. So here find two factors of 132 in such a way that by subtracting we get the middle term. So here middle term is what? Middle term is 1 only here. So middle number is 1. Therefore factorize 132 in such a way that by subtraction we get 1. So the factors are 12 and 11, because subtraction of 12 and 11 is 1. So here, but which number is positive and which number is negative, that is the question here. So here the simple logic is that the larger term, larger factor get the middle term sign. Larger factor get the middle term sign. So out of 12 and 11, which one is larger factor? Yes, obviously it is 12, that is the larger number. So larger number get the middle term sign. So it is minus 12x, and another number get the opposite sign, means it is plus 11. So now sign to be given to both factors, since the last term is minus. So give middle sign only to the bigger factor and opposite sign to the smaller factor. So minus, so bigger factor is 12, therefore minus 12, and the smaller factor is 11, therefore it is plus 11. So now let us try to split the middle term. It is minus 12x plus 11x minus 132 equal to 0. Now from first two terms, x is common. X is common. So we are left with x minus 12, because here x is common, so it is minus 12 only. Now here from these two brackets, 132 is also divisible by 11 and 11 present here also. So we can take 11 as common.
So if 11 is common, then we are left with x minus 12. Now from these two terms, x minus 12 is common. So x minus 12 is common. So into bracket of x plus 11. So either first term is 0 or second bracket is 0. So x is equal to 11 or x is equal to minus 11. Okay, now here you can observe that here the coefficient of x square is 1. Here the coefficient of x square is 1. If the coefficient of x square is 1, then we can write direct factors. We can write direct factor. देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप से ऊपर से डायरेक्ट आप फोर्थ स्टेप कर सकते हो. क्यों? बिकॉज हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्टली ये फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं? देखो x ब्रैकेट कर दो और फिर से x के ब्रैकेट में लिख दो. फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो, सेकंड फैक्टर सेकंड में विद द साइन लिख दो. तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं. लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो. इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, देन वी कैन राइट डायरेक्ट फैक्टर्स. सो फर्स्ट स्टेप के ऊपर से आप डायरेक्टली ये फोर्थ स्टेप लिख सकते हो. ओके, समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो. So these are the two required factors of given quadratic equation. So 12 and minus 11 are the answer for this question. Now the next question is 8x square minus 22x minus 21 equal to 0. So it is in a standard form. Now let us multiply first term and the last term. So 8 multiplied by 21. 8 multiplied by 21, that is equal to 168. So factorize 168 in such a way. See here, what is the last term sign? Last term is minus. So last term is minus. Therefore, by subtraction, we need 22. By subtraction, we need 22. So let us factorize 168. So 168. Again, you can write 8 as 2 into 2 into 2. And now 21 is what? 21 is 3 7s are 21. Okay. Now let us try to combine the numbers. Make two groups. Okay. So take the biggest number as one group. So biggest number is 7. So take 7 as a one group and try to multiply another groups. Okay. So if you multiply all these numbers, then 3 multiplied by 2, that is 6. 6 2s are 12. 12 2s are 24. So it is what? 24 multiplied by 7. So if you subtract 24 and 7, if you subtract 24 minus 7, then it is not equal to 22. Means this combination of factors is not possible here. So let us try to make another combination. So 7 2s are what? 7 2s are 14. 7 2s are 14. And 3 2s are 6 2s are 12. So if you subtract this one, then it is not equal to 22. So this combination is also not possible. देखो ऐसे करके हमें combinations बनाने हैं. डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस बना के हमें चेक करना होगा कि वेदर सब्ट्रैक्शन 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, तो चलो एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और उसे मल्टीप्लाइड कर दो 7 के साथ, तो क्या होगा? देखो 7 2s are 14, 14 2s are 28 एंड 2 3s are 6. यस, हो गया कि नहीं? 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ रहा है. यस, इज इट क्लियर? So 28 minus 6, that is equal to 22. अब देखो हमें साइन देनी है कि कौन सा फैक्टर प्लस होगा और कौन सा फैक्टर माइनस होगा. अगर लास्ट टर्म माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करके ही मिडिल टर्म लाना है. तो सब्ट्रैक्शन करके मिडिल टर्म लाना है, यानी कि एक फैक्टर जो है वो प्लस होगा, एक फैक्टर माइनस होगा. सो सिंपल लॉजिक है, एक ही सिंपल लॉजिक है कि बिगर फैक्टर को मिडिल टर्म की साइन दे दो. व्हाट इज द बिगर फैक्टर हियर? बिगर फैक्टर इज 28. सो 28 को मिडिल टर्म की साइन दे दो. मिडिल टर्म नेगेटिव है, यानी कि 28 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. एंड अनदर फैक्टर इज अपोजिट साइन. अपोजिट साइन मींस इट इज +6. सो बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया. ओके, चलो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. एक बार यहाँ पे देखना कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ये होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 21 और लास्ट टर्म माइनस है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करके हमें मिडिल टर्म लाना है. तो सब्ट्रैक्शन करके मिडिल टर्म लाने के लिए 8 को अगर आप स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा. 21 के फैक्टर से 3 7s आ. अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो भी पॉसिबल है वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं. तो एक कॉम्बिनेशन हमें इस तरीके से मिला कि 7 2s are 14, 14 2s are 28 एंड 3 2s are 6, यानी कि 28 एंड 6. सो 28 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आ रहा है, यानी कि ये फैक्टर हमारे पॉसिबल है.
लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है, यानी एक फैक्टर जो है वो प्लस होगा, एक फैक्टर माइनस होगा, ये तो क्लियर बात है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर माइनस और कौन सा फैक्टर प्लस? सिंपल सा लॉजिक, एक ही लॉजिक कि जो भी बिगर टर्म है वो माइनस होगा, जो भी बिगर टर्म है वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है। सो मिडिल टर्म की साइन जो है वो बिगर फैक्टर को देनी है और अपोजिट साइन स्मॉलर फैक्टर को दे दो। सो ये -28 + 6 हो गया। तो चलो अब ये लिखते हैं -20x + 6x। चलो फर्दर इसे कैसे स्प्लिटिंग करेंगे? -28x + 6x -21 = 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 4x इज कॉमन बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 28 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 7 4s are 28. So here x is also common. So it is 4x into bracket of 2x minus 7 plus here 3 is common. So into bracket of 2x minus 7 that is equal to 0. अब ये दोनों ही ब्रैकेट में से क्या कॉमन आएगा? 2x minus 7 and 2x minus 7. So it is 2x minus 7 into 4x plus 3 equal to 0. Either first bracket is 0 or second bracket is 0. तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7/2, क्योंकि ये -7 राइट हैंड साइड में जाएगा, +7 हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, ये +3 राइट हैंड साइड में गया, -3 हो गया, 4 डिनोमिनेटर में आ गया। सो दिस आर द टू फैक्टर्स, 7/2 एंड -3/4 आर द टू रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 10x² + 3x - 4। तो अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। इफ कोई भी इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में रीअरेंज करना है, यानी कि x² वाला टर्म सबसे पहले लिखो, उसके बाद x वाला टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, जैसे कि ax² + bx + c में हम लिख रहे थे वैसे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कौन सा है? 4 है, 10 है, तो 10 4 क्या हो गया? 40। अब 40 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि सब्ट्रैक्शन होके क्यों सब्ट्रैक्शन होना चाहिए? क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होके हमें लाना है, लास्ट टर्म माइनस है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होके हमें लाना है मिडिल टर्म। So we have to factorize 40 in such a way that by subtraction we get 3. By subtraction we get 3. Okay, चलो तो अब कोशिश करते हैं इसे फैक्टराइज करने की। So 40 के फैक्टर्स ऐसे करो, 1 multiplied by 40, तो इसका सब्ट्रैक्शन 3 नहीं हो रहा है। अब 2 multiplied by 20 करके देखो, ये भी नहीं हो रहा है। 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 10s, सो 10 - 4 करोगे तो वो भी 3 नहीं हो रहा है। अब अगर आप 5 से करोगे तो 5 8s, यस, 8 - 5 is 3। तो देखो कैसे सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लिए। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली 8 and 5 आर आवर फैक्टर्स। बट हियर द क्वेश्चन इज दैट which term get the plus sign and which term get the minus sign. So very simple logic is that the middle terms sign get to the larger factor. It means larger factor get the middle term sign. Larger factor get the middle term sign. Here 5 and 8. Out of 5 and 8, which one is larger? 8 is larger. So 8 is larger. Therefore, middle term sign goes to 8. Means +8 and -5. So +8 and -5 are our final factors. So let us write like this: +8x - 5x. Splitting 3x in such a way that +8x - 5x, 10x² and -4 as it is, that is equal to 0. Now first two brackets में से क्या कॉमन आएगा? 2x is common from first two brackets, so we are left with 5x + 4. Here nothing is common, therefore we have to take -1 as a common, so it is 5x + 4, that is equal to 0. Now 5x + 4 into 2x - 1, that is equal to 0. Either first bracket is 0 or second bracket is 0. So if first bracket is 0, then it is x equal to -4/5, it is 1/2, because -1 goes to right hand side, so it is 1/2. So our final roots for this quadratic equation is -4/5 and 1/2. Okay students, now let us take one more example. It is 1/9x² - 2/3x + 1, that is equal to 0. अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि यहाँ पे 1/9 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये 9 and 3 को रिमूव करना है। तो 9 and 3 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 and 3? 9 ही होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 ऑलरेडी आ रहा है, तो 9 ही इसका एलसीएम होगा।
सो 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, दोनों तरफ हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, अब ये 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 यानी कि 3 2 जा 6x। अब 9 1 जा 9 हो गया, 0 से 9 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म प्लस है, यानी कि एडिशन करके मिडल टर्म लाना है। लास्ट टर्म प्लस है यानी एडिशन करके मिडल टर्म लाना है। जैसे कि आपको पता है 9 1 जा 9, सो 9 के ऐसे फैक्टर्स मुझे बताओ कि एडिशन होके 6 आ जाए। सो यस, वेरी सिंपल, 3 3 जा 9 ही होगा कि नहीं, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यस, वेरी गुड। So now here middle term is minus, therefore both the factors are minus because by addition, तो जब भी हमें एडिशन करके लाना है तो बोथ द फैक्टर्स की साइन सेम होनी चाहिए, या तो दोनों ही प्लस होंगे या तो दोनों ही माइनस होंगे, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया -3 एंड -3, सो x² -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, therefore we can write direct factors, we can write direct factors means ये स्टेप से आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, ये -3 है तो x -3 कर दो, ये भी -3 है तो इसे भी x -3 कर दो, दैट इज इक्वल टू 0। Now either first bracket is 0 or second bracket is 0, so x equal to 3 or x equal to 3. So the roots of this quadratic equation is 3 only. Okay, is it clear to everyone? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस कमेंट करके बताना, राइट? ओके, चलो तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। So thank you very much for being with us. We'll see you tomorrow with the next concept, that is completing square method. Okay, so practice the questions of the factorization from your textbook and any worksheet. Okay, chalo.